Hello students, today I am going to introduce about air pollution. What do you mean by air pollution? The increase in the content of harmful substance present in the air. This is called as air pollution. The undesirable substance is called as air pollutants. Okay. So air pollution is defined as undesirable substance in physical, chemical or biological characteristics of air. Okay, this is called as air pollution. Okay. Now, what is the cause of air pollution? First cause beta क्या है? Excessive burning of fossil fuels like coal and petrol. ठीक है, that produce a small amount of nitrogen and sulfur. जो fossil fuels होते हैं इनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है, बट व्हेन दीज फ्यूल आर बर्न, जब इनको हम जलाते हैं तो क्या होता है, इट रिलीज द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन. तो ये लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र फॉर्म करते हैं, जैसे NO2 है, ठीक है, SO2 है. दीज ऑक्साइड्स डिज़ोल्व इन एयर, सॉरी इन रेन. ठीक है, ये ऑक्साइड्स पहले एयर में मिक्स होते हैं, फिर रेन के साथ भी डिज़ोल्व होते हैं एंड दैट कॉजेस एसिड रेन. ठीक है, दिस एसिड रेन shows the harmful effect like corrosion of monuments. एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ताजमहल. ठीक है, ताजमहल इज़ फेसिंग ए ग्रेट थ्रेट ड्यू टू द मथुरा refining. It produce a large amount of SO2 and NO2 that contribute the acid rain. Okay. Now, point number 2. The burning of fossil fuels that release unburnt carbon particles which reduce visibility, and these suspended particles could be unburnt carbon particles. This is called as hydrocarbon. इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर along with the condensed water it will form a smoke. तो ये धुएं का ऐसे स्मोक, देखो ये लॉस एंजल्स स्मोक, इस तरीके से ये स्मोक बनती है. नाउ द नेक्स्ट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज ड्यू टू रेगुलर ब्रीथिंग एयर containing these harmful substances that cause allergies, cancer, heart diseases, etc. Okay, so these are the causes of air pollution. This is the first cause, second cause and third cause. Now the fourth cause is point number 4. Many industries release a high amount of poisonous gases like CO into the atmosphere, which also cause air pollution. Okay, point number 5 आप डाल सकते हो बेटा कि due to the forest fire
excessive use of chlorofluorocarbon, ठीक है, which are used in refrigerator and ore refining, harmful gases are released into the air and which also cause the air pollution. Okay, पॉइंट नंबर 6 भी बता सकते हो बेटा, जो डस्ट पार्टिकल्स है दैट इज ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन. इट्स inhalation causes allergic like asthma, cold or cough, or it may get mixed with smoke or other harmful substance, then it will cause the pollution. Okay, these are the 6 points which cause the air pollution. Now, what is the effect of air pollution? What is the effect? Point number 1, it affect the respiratory system. ठीक है, सबसे पहले ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालता है एंड कॉज द डिजीज लाइक अस्थमा, लंग कैंसर एंड निमोनिया एट्सेट्रा. ओके, पॉइंट नंबर 2, pollutant gases that causes allergy and irritation in eyes and lungs. Okay, point number 3, the gases like NO2 and SO2, NO2 and SO2 that get dissolved in air and it will give rise to the acid rain. Okay, next, point number 4, presence of high level of pollutants in air that reduce the visibility in the cold weather. When the water condenses out of air and it will form a smoke. Okay, point number 5, it causes greenhouse effect and leads to the global warming. ओके, ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण किस चीज़ का है? एयर पॉल्यूशन ही है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन. अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, यूजिंग डिवाइसेस इन व्हीकल्स टू रिड्यूस द pollution. Okay, second, switching to safe fuel. ठीक है, switching to safe fuels like CNG. CNG means compressed natural gas, wind energy, solar energy, etc. Okay, point number 3, the use of strict pollution levels for vehicles and industries. ठीक है, स्ट्रिक्ट जो रूल होता है वो फॉलो करना चाहिए व्हीकल्स के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, तभी हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा. ओके, now this is the topic of air pollution. This is completed. Now one question arises from here, what do you mean by acid rain? This topic is important. acid rain होती क्या है बेटा, ये आपको एक्सप्लेन करना है. मेनली जो एसिडिक रेन है, it is the decomposition of acidic solution present in the water droplets present in the air. Okay, like rain, snow, fog,
etc. This is made acidic by the presence of H2SO4, sulfuric acid, and nitric acid. But when the sulfur and nitrogen oxides combine with oxygen and water in the atmosphere, it will produce the sulfuric acid and nitric acid. Okay. So this is the main cause of एसिड रेन. फिर ये जो मेन ऑक्साइड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स और जो है नाइट्रिक एसिड, these oxides get mixed with air and cause the acid rain. Okay. Now the next topic is water, a wonder liquid. A very large area of the earth's surface that is covered with water. Water is found inside the earth, in the atmosphere, present in the form of water vapors. The water in seas and oceans is saline. Fresh water is found in rivers, lakes, ponds, and as ice and snow at the poles and mountains in the cold region. Okay. Water is needed by the living organisms because all the life processes and cellular activity that needs water. So all the organisms need water to survive. Okay. The underground water and the water in rivers, lakes and ponds, that is also fresh water. Okay. Now, what is the importance of water for living being? देखो बेटा, फर्स्ट क्या इम्पोर्टेंस है? इट प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑल द सेलुलर प्रोसेसेस या सेलुलर एक्टिविटीज़. ओके. सेकेंड आप कह सकते हो इट इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस. It is necessary for the transportation of substance from one part of the body to the another part. Third, water helps to maintain the body temperature. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है. पॉइंट नंबर 4, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट विद इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी में जो सॉल्ट होता है उसको भी क्या करता है? बैलेंस करता है. एंड द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, all the reaction that takes place within our body and within our cells that are dissolved in water. Okay. All the organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to survive. And the last point is water is essential for the life. The availability of water decides the number of individuals of each species that are able to survive in a particular area. Okay. Means the amount of water and other factors like temperature and nature of the soil that decide the diversity of the species and the number of individuals of each species in an area. Okay. Now the next topic is water pollution. The increase in the content of harmful substance present in water, this is called as water pollution. Okay. Means you can say that the undesirable change in the physical, chemical and biological quality of water due to the addition of unwanted and harmful substance. These substances are called as water pollutant.
Okay, now what is the cause of water pollution? ये cause है बेटा. Water pollution is caused by the addition of harmful substances like fertilizers, pesticides from the farms, sewage from towns, cities, factories, harmful chemicals from factories. Disease causes microorganisms, change in the amount of oxygen dissolved in water, or change in the temperature of water. Okay. तो आप ये कह सकते हो बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लेके चलते हैं इसमें, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर डिज़ोल्व द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड and take them to the water bodies where they cause harmful effect on the aquatic life. Okay. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो कॉज है बेटा वो हम लेके चलते हैं, सीवेज फ्रॉम टाउन. इस केस में क्या होता है बेटा, डंपिंग ऑफ सीवेज एंड अदर वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज, दे एडवर्सली इफेक्ट द वाटर क्वालिटी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज harmful chemicals from industries, cities and factories. Industries use water for cooling the various machines and release hot water into the water bodies. This causes a sudden change in the temperature of water bodies that affect the breeding of aquatic organisms. Okay. So these are the harmful effects which cause the water pollution. Now next is effect of water pollution. अब water pollution का effect किस पे पड़ता है, देखो बेटा. फर्स्ट रीजन, एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस टू द वाटर बॉडीज़. ठीक है, फर्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. कैसे बेटा, देखो इसमें जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डर्ट, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक हैवी मेटल्स लाइक मरकरी एंड लेड. ठीक है, these get mixed with water and make it unfit for consumption. Okay. Point number second, death of flora and fauna of water bodies. Death of flora and fauna of water bodies. The amount of organic waste increases in water bacteria and other organisms that multiply very fast by using the dissolved oxygen which are present in water and make the water body deficient in oxygen. So due to the deficiency of oxygen, it kills the fishes and other aquatic animals. Okay. Now point number 3, thermal pollution or change in temperature. Thermal pollution, इस केस में क्या होता है, sudden marked change in the temperature range of water bodies in which the aquatic organisms are living and that can be dangerous for them. Okay. Now next is point number 4, human diseases. Human diseases. Water provides a home to pathogens which causes infections to the humans.
These pathogens include virus, bacteria, fungi, nematodes, protozoans, and cause diseases like typhoid, cholera, jaundice, etc. in the human bodies. Okay, so these are the effect of water pollution. Now, the next is how to control the water pollution. अब इसको कंट्रोल कैसे करना है बेटा? पॉइंट नंबर 1, sewage and garbage that is generated by our homes and industries that should be treated properly before discharging into the water sources. If it will reduce the water pollution that causes less harm to the aquatic life. Point number 2, if the hot water that is generated by the industries that is collected at a common place and then cooled before it discharges into the water bodies, then it will not affect the breeding capacity of the aquatic organisms. Okay. Now next is point number 3. If the commercial areas, factories and industries that are shifted to the isolated areas, then it can reduce the effect of water pollution. Okay, so these are the control of water pollution. Now the next topic is soil, or the first is formation of soil. पहले soil क्या है बेटा? Soil is the portion of outermost layer of the earth which provide a spot for the growth of the plants. Okay, the minerals which present in the soils that provide a variety of nutrients to the life forms. Okay, so this is a very important resource that decide the diversity of life in an area. Okay, in this include first point, formation of soil. Soil is formed by the breaking down of rocks on the surface of earth by the physical, chemical and biological processes. Okay, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है पॉइंट्स. सेकेंड पॉइंट, द सन हीटेड द रॉक्स. सन हीट करता है रॉक्स को हीट करता है ड्यूरिंग द डे टाइम. The rocks expand and at the night rocks cool and contract. So this causes the rock to crack and break into the smaller pieces. Okay. Now point number 3, when the water enters the cracks in the rocks and water freezes, it expands and causes the cracks in the rocks to widen and break into the smaller pieces. The flowing water that carry the rock pieces, these pieces rub against each other and become smaller and smaller pieces. ठीक है, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं. Now next is point number 4, strong winds. ये क्या करती हैं? That break the rocks into the smaller particles and that carries it from one place to another place. Okay, and now next is the roots of large trees that grows into the cracks in rocks and break it into smaller pieces. The lichens which grow on rocks that produce some substance which cause the rock surface to the पाउडर एंड बिकम सोयल. ठीक है, रॉक सरफेस को पाउडर फॉर्म में बना देती है और फिर इससे क्या बन जाता है? सोयल बन जाती है. ओके, सो हेयर क्या होता है? सोयल की फॉर्मेशन होती है. तो इन स्टेप्स के थ्रू जो होती है सोयल बनती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोयल फॉर्मेशन. ठीक है, फर्स्ट इज सन.
The sun heat up the rocks during the day, so they expand, and during night these rocks cool down and contract. So the all parts of the rocks does not expand and contract at the same rate. So this result in the formation of cracks, and the hard rock breaks into the smaller pieces. Okay, so sun is very important to give heat of the rocks. Now second point is water. Water is also help in the formation of soils in the two ways. Firstly, when the water get into the cracks in the rocks formed due to the uneven heating by the sun. This freezing of this water that would leads to the widening up of the cracks later. बाद में क्या हो जाता है, जो ये वाटर फ्रीज जमना स्टार्ट हो जाता है रॉक्स में, तो ये क्या करता है, उसके क्रैक्स को और भी वाइड कर देता है. सेकेंड रीजन ये है कि जब वाटर फ्लो होता है हार्ड रॉक्स के थ्रू, ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक इसमें पानी जो होता है फ्लो होता रहता है. तो जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है दैट कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स डाउन स्ट्रीम. तो ये क्या साथ लेके आता है, छोटी और बड़ी और छोटे छोटे पार्टिकल्स को, रॉक्स के पार्टिकल्स को साथ लेके आता है नीचे की तरफ. सो दीज रॉक्स, फिर ये रॉक्स क्या होती हैं, एक दूसरे से रब होती हैं, एंड abrasions causes the rocks to break down into the smaller pieces. तो इस वजह से स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है. The water takes these particles along with it and deposited them further down. So that's why the soil is found in the distinct place from its parent rock. Okay. So the water also shows the major factor responsible for the soil formation. Now the next factor is wind. Wind acts similarly as water. Strong winds that erode the rocks down and carries sand from one place to another place. ज़्यादा अगर हवा चलेगी तो क्या होगा, जो रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इरॉड होके मतलब टूट जाएगी, और रॉक्स जो है विंड के साथ सैंड भी जाएगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फैल जाएगी. नाउ द फोर्थ फैक्टर दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस also influences the formation of soil. The lichens grow on the surface of rock and release some substance that cause the rock's surface to the powder form, and it will form a thin layer of the soil. Okay. Some small plants like mosses that grow on the surface of rock and cause breakdown of the rock. क्यों होता है बेटा ऐसा, कि जो रूट्स होती हैं बड़े बड़े ट्रीज़ की, वो भी क्या करती हैं, रॉक्स को ब्रेक डाउन करती हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, डीप में होती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं इनटू द रॉक के अंदर, और इससे उसकी जो बायोलॉजिकल विदरिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और उस पेनिट्रेट हो जाती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं इनटू द रॉक बेड की फॉर्म में. ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉयल फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉयल. अब सॉयल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है. Soil is the mixture with the small particles of rocks and bits of delayed living organisms like humus and partially decomposed plants and animal matter that is called as detritus. ठीक है. It contains a various forms of microorganisms. जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सोइल के वो क्या है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में.
minerals, air, water, organic matter and living organisms. Okay. Type of soil that is decided by the average size of the particles, and the quality of soil that decide by the amount of humus, organic matter and microscopic organisms. Here we take one example. Black soil is rich in calcium, iron, magnesium and aluminium, whereas red soil is rich in iron oxides. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ सोयल तो क्या डिसाइड करती है, पार्टिकल्स का साइज़ कितना है. ठीक है. और क्वालिटी ऑफ सोयल क्या डिसाइड करती है कि उसके अंदर कितने अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है. ह्यूमस मीन्स जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमस. ओके. नाउ these are the constituent of soil particles. Okay students, thank you.